So let's start with the cultural and educational rights, right? So under Article 29 and 30, the certain cultural and educational rights are included. Minority is not defined anywhere in the Constitution. Remember that it refers to any community that is numerically less than 50% of the population of the state. Further, it cannot be defined nationally but only at state level. Remember that. टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका एक एसेंशियल जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है. इसमें बोला गया दैट द माइनॉरिटी स्टेटस लिंग्विस्टिक और रिलीजियस इट शुड बी डिटरमाइंड बाय द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट एंड नॉट एट द नेशनल लेवल. इट वॉज लेटर अफर्म्ड इन द केस ऑफ इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आर्टिकल 29 किस विषय में बात करता है, हमें ये समझना पड़ेगा. सो आर्टिकल 29(1) इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द कल्चरल राइट्स of any section of citizens having a distinct culture, script or language. Thus it applies to any section of citizens whether minority or otherwise. Article 29(2) says that a school run by minority, if aided by state, cannot refuse admission to children of other communities. Further under Article 15 subclause 5, मैंने आपको बोला था जब हम 15(5) पढ़ेंगे, जब हम 29(2) की बात करेंगे, the state has the power to make reservations for backward classes in all such schools, whether aided or unaided. Then State of Bombay versus Bombay Educational Society, it struck down an order of the Bombay government prohibiting admission of non-English speakers in English medium school, since it denied admission solely on the ground of language in violation of Article 29 subclause 2. Right. Then we'll talk about Article 30. Article 30 subclause 1 grants the rights specifically to minorities, religious and linguistic. Right. यहाँ पे of any citizens है having a distinct culture, script or language. Right. To establish and administer educational institutions of their choice. However, the right extends only to the universities established by minorities. It was not established by them. They do not have the right to administer them. ये कौन से केस में बोला, नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑल्सो द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड नॉट बाय अ मुस्लिम मैन. यहाँ ये बोला कहाँ गया, नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में. दस इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 सबक्लॉज 1. 50% of reservation of movements under AMU Act was held unconstitutional by the court. Then DAV College, Punjab versus State of Punjab. The power of state to determine the medium of instructions cannot take away the right of minorities to give education through their language. ठीक है, लैंग्वेज का प्रोस्पेक्ट आता है, कल्चर की चीज़ें आती हैं, वो इसी में ही इन्वॉल्व होगा. सॉरी फॉर दिस. राइट. तो रिलेशनशिप क्या है आर्टिकल 29 और 30 में? राइट. आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, देयर माइट बी एन इशू. Yeah, really sorry for this. So what, I'll tell you the difference here only first of all. So what is the difference, what is the relationship between Article 29 and Article 30? So 29 applies to any section of citizens, whereas 30 is specifically for the protection of minorities, right? And apart from that, 29 is concerned with three subjects, right? Three major subjects it is concerned with, which is religion, language or culture, whereas Article 30 deals with language and religion as well. Article 29 is concerned with the right to conserve language, script and culture at a broader level, right? Whereas Article 30 deals with the right to establish and administer educational institutions. ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है. क्या पता आपसे किसी ना किसी तरीके से ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो वो आपके साथ मसला हो जाएगा. ठीक है, वो आप मत करिएगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे नोट्स तो मैं अटैच कर ही दूंगा. सॉरी, तो स्क्रीन चलेगी, उसके लिए माफ़ी. वील कनेक्ट सून इनफ इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.